Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. Today we are going to cover a Canadian stock for the first time, and the stock's name is CI Financial Corporation. ये TSE पे listed है for 15.54 Canadian dollars, और इसका market cap है 2.58 Canadian dollars. अभी at present price to earnings ratio is not there. The reason being the company is net income negative. Net profit इनका negative रहा है for this particular year. और फिर भी we will analyze what is the reason that I'm looking at 2x the current price at which this company is trading. The major reason for the change in opinion of this particular company is because of the major reformation which has come about since ever since they have appointed their new CEO Kurt McAlpine, and he was appointed in September 2019. और उस टाइम पे ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुआ करती थी 2019 तक, बट स्लोली दे हैव गॉन थ्रू अ मेजर एक्विजिशन स्प्री. They are undergoing major acquisition spree in US, about 30 of them, and they spent a hell lot of money to expand their business from Canada to US as well. तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. तो ये एक कंपनी का फोकस रहा है. दे आर एंड अंडरस्टैंडेबली सो. कनाडा से बिजनेस ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंसिडरिंग द पॉपुलेशन इज़ स्मॉल, और जितना पॉपुलेशन कम होता है उतना ही बिजनेसेस करना या बिजनेसेस का ग्रो होना एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है. अगर पॉपुलेशन वाइज कंपेयर किया जाए कनाडा और यूएस को, तो लगभग it's about 10x. That's the difference. And there are global companies which emerge out of US, which have tremendous growth, and they have applications all over the world. The products are used all over the world. We would very much like such companies to come about in Canada, but अभी फ़िलहाल the case is that कि US काफ़ी आगे बढ़ा है, and it's the the index उनका है या assets है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है at this point of time. And we can clearly see, अगर हम लोग कंपेयर करें टी एस एक्स को, जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उसका ग्रोथ देखें फ्रॉम 2000, ये तो एक मेजर ड्रॉप था 2000 का जो है फॉल, लेकिन उसको अगर साइड में रख के भी जस्ट कंपेयर कि टी एस एक्स का अभी तक ग्रोथ कितना रहा है टिल इट डेट, दैट इज़ 23 ईयर्स, सिर्फ 86% का रिटर्न मिला है. तो अगर आप 2000 में अगर इंटेक्स में पैसे लगाते, तो अगर आप $1 लगाते तो यू वुड हैव जस्ट गॉट $86 आफ्टर 23 years of investment. Similarly, if you had done the same in S&P 500, which is US के स्टॉक्स के बेसिस पे, तो वो अगर यहाँ पर आप 2000 का पीक देख लीजिए बिफोर द फॉल, वहाँ से मैंने यहाँ पर करंट ईयर करंट टाइम पे अगर मैंने इसको मैं फिक्स करूँ, तो ये 234% का रिटर्न देता है. डबल से ज़्यादा 2.3 टाइम्स आपका पैसा हो जाता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो दिस इज़ ये एक बहुत अच्छा रीज़न है टू फिगर आउट कि हाँ, there is a reason for you for CIX to expand into US. Similarly, I mean, just comparing this particular data, अगर आप emerging या developing economies की बात करें, जो जिनकी growth एक बहुत अलग level पे होती है, they have a lot of room to cover. तो यहाँ पर you can see 1000 times is the gain that you would have got if you were invested in the index only in 2000, year 2000. So CIX का जैसे मैंने कहा, they have paid approximately $2.85 billion to acquire 30 wealth management firms, nearly all in the US, in just over 2 years. तो ये शुरू हुआ है 2020 onwards. Kurt McAlpine joined the company. He had ideas to expand massively, and they went on spending $2.85 billion, which eventually got added as a debt in their balance sheet. But nevertheless, they कंसिडरेबल उनका एक एसेट अंडर जो मैनेजमेंट था, इट वाज जस्ट $100 billion in 2019, and that increased to $450 billion at this point of time. So it is 4.5 times the asset under management which they were working on. And because of
this particular debt that they had, इस वजह से there were issues कि भाई income इतना नहीं है, income इतना generate नहीं हुआ है, but still the debt is very very high. तो इसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने यूएस में की जो एंटिटी है उसको डिसाइड किया था कि उसको पूरा एक अम्ब्रेला के अंदर डालेंगे और उसका एक आईपीओ रिलीज़ करेंगे, एंड वी विल लिस्ट इट सेपरेटली इन द यूएस. But they managed to get private investment into the company and get some cash out of it. So let's just quickly go through what are the numbers in the US for the US entity when they try to raise some money to offset their debts, which they collected because of investment into US business basically. तो यहाँ पर हम देखेंगे that ये आर्टिकल है मई 2023 की, and it says group of institutional investors like Bain Capital, FlexPoint Food, Heirs Management Fund, State of Wisconsin and Abu Dhabi Investment Authority, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में. और सिर्फ यूएस की बिजनेस को they have come up for the valuation आया है $6.7 billion का. जो करंट मार्केट प्राइस आप सोचिए, CIX at current price at current level is just trading at 2.58, राइट. और वो उनकी जो यूएस की कंपनी है दैट इज़ एट 6.7 बिलियन. आप इमेजिन करिए एक 2.58 बिलियन डॉलर की कंपनी है जिसका सब्सिडियरी is 3 times 2.5 times 3 times than its parent company. Now furthermore 20% was owned, ये जो institutional investors हैं इन लोगों ने खरीदा, they gave money to the company, and by retaining 80% of the US business, CI holds a stake value by the new investment of under $5.4 billion. तो सिर्फ उनकी यूएस एंटिटी 5.4 बिलियन डॉलर्स की है और पूरी कंपनी ट्रेड करी है 2.58 बिलियन डॉलर्स. अगर आप इसको ये करते हैं, इट्स लिटरली 2x. और ये सर मैं यूएस की कंपनी की बात कर रही हूँ. तो इट्स $29 पर शेयर जस्ट द यूएस एंटिटी जो सीआई के पास है, करेक्ट. और जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास एन नंबर ऑफ डेटा होता है, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू वांट योर मनी टू ग्रो, इवन दे वांट देयर मनी टू ग्रो, राइट. तो अगर वो $29 पर शेयर के हिसाब से अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जस्ट इन द यूएस एंटिटी, दे डेफिनेटली आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर टू कम बैक टू देम, राइट. तो ये आप सिर्फ इसको समझिए कि ये सिर्फ अपने यूएस के वैल्यूएशन पे आ गया. तो इसके लिए पर शेयर का प्राइस डबल होना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और कंपनी क्या स्टेप्स ले रही है आगे सो दैट वी गेट देयर. हम इसको क्विकली एक आर्टिकल हम देख लेते हैं यहाँ पे, which CI Financial's US expansion is a Canadian success story, which was Feb 2022 की एक आर्टिकल है. Their ex-CEO, William Holland, the non-executive chairman of the board, at this point of time, he was the CEO of the company from 98 to 2010, and he has been associated with the company for 32 years. He's mentioning Kurt was perfect for what we needed. He's young and comes from a digital background. और ऑल्सो यू कैन सी इनके सीईओ का भी कहना है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट में धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं इन द यूएस. तो ये एक आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मैंशनड हैं. बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट विलियम हॉलैंड इज़ मैसिवली इन्वेस्टिंग इन द कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये जब आप इनसाइडर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, इन द पास्ट 12 months देयर हैव बीन मैसिव बाइंग बाय द इनसाइडर्स, सो दे डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 बिलियन डॉलर्स है वो 450 बिलियन डॉलर्स हो जाता है. आप सोचिए एवरेज मैनेजमेंट फीस 1% अगर होती है म्यूचुअल फंड्स की, तो अगर 1% ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स और आप 450 बिलियन डॉलर्स का 1% समझिए, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज मैसिवली इन द टॉप लाइन. और बॉटम लाइन ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी. बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ नॉट बिन द केस, बट वी विल लुक एट इट लेटर ऑन. ये इनसाइडर ट्रेडिंग की वॉल्यूम आप देखिए. एंड विलियम हॉलैंड की अगर आप बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग में ही,
तो यहाँ पर यू कैन क्विकली सी कि ओनरशिप की बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पर ही इज़ बिन बाइंग मैसिवली ही इज़ बिन बाइंग मैसिवली एंड इफ़ ये डेटा है मई 23 से ऑनवर्ड्स $15 million के शेयर्स ओनली विलियम हॉलैंड ने परचेज किए हैं फ्रॉम पब्लिक ओपनली फ्रॉम द पब्लिक ये this indicates that they have a lot of understanding and promise about the company and they believe in the company at this point of time कि ये उनके पैसे grow होने वाले हैं and that is the reason why they've been on a buying spree. Apart from this, कंपनी आगे बढ़ने के लिए दे आर रिड्यूसिंग देयर मैनेजमेंट फीस सिग्निफिकेंटली दे आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर सेल्स डन म्यूचुअल फंड्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी इज़ फेसिंग हेडविंड्स बिकॉज ऑफ मैसिव इन्फ्लेशन एंड द Canadians pulling out their money. So it's been a massive issue for all the asset management companies at this point of time. They're facing a lot of headwinds at this point of time, considering कि इन्फ्लेशन है हर कोई अपना अपना पैसा निकालना चाह रहा है जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है जस्ट टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशंस तो उस वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इशू में है एंड ऑल्सो मैंने वील जस्ट गो थ्रू ऑल द अदर डिटेल्स एज वेल CI फाइनेंशियल कॉरपोरेशन has been accelerating their buybacks तो we will quickly go through the chart for this I will say अगर हम देखें तो ये कंपनी का प्राइस बहुत हद तक एक स्टडी प्राइस पर आया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नियरली 2-3 years say the prices have not moved at all. Oh sorry, this is the index. Let's open CI Corporation. Okay, so this company has not shown a lot of growth in terms of its pricing for a very long time and the reason being कि डेफिनेटली इन लोगों का जो है बैलेंस शीट वगैरह में भी इट्स नॉट डन वेरी वेल ओवरऑल सो फार बट ये होना भी मुश्किल था कंसिडरिंग अभी इंटायरली मार्केट्स आर डाउन देर इज़ नो इफ़ यू जस्ट क्विकली सी द कॉम्पोजिट एज वेल मैं S&P खोल देती हूँ जस्ट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लेट्स जस्ट ओपन NASDAQ 100 तो अगर इसको खोल के देखते हैं तो अगर मैं 1 year में बताऊं और 3 years एक्चुअली अगर आप देखें 21 ऑनवर्ड्स तो देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मूवमेंट प्राइस सेम का सेम ही रहा है हार्डली 5-6% का एक ग्रोथ देखा गया है और सेम इज़ द केस विथ ऑल इंडाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देर हैज़ बिन अ मैसिव स्लो डाउन long consolidation especially when the government has been trying to control the inflation and the cash availability is very low and that is why money is not in the equity markets at this point of time but obviously there has been a breakout and you know we could possibly see another bull run coming forth that's something for the next 1 or 2 years that we can expect or similarly that will pan out very well for for CIX definitely जैसे मार्केट्स इम्प्रूव होते हैं म्यूचुअल फंड्स इम्प्रूव होते हैं एंड मनी विल ग्रो इवेंचुअली फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स for the management as well as wealth managers asset management companies like CIX तो अभी ये एक बल्क बाइंग जोन में है इफ़ यू सी इट हैज़ बिन इन दिस पर्टिकुलर जोन एंड देर इज़ heavy buying the company itself is continuously doing buybacks currently they also have a plan of buying back $100 million worth shares from the public already इन लोगों ने $85 million के shares खरीद लिए हैं और they will continue to do it I mean it's highly underpriced but as we say as we saw कि कंपनी $5.4 billion की अगर इसकी अगर मैं इक्विटी की बात करूं जो CIX के पास है अगर वो सिर्फ इस लेवल पे भी पहुंच जाती है तो पर शेयर का प्राइस लिटरली नियरली डबल हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट तो अगर करंट प्राइस से भी हम लोग इसको देखें कि ये $5.4 billion की अगर वैल्यूएशन का कंपनी हो जानी चाहिए तो वो डबल हो जानी चाहिए दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ये 100% का हम लोगों को रिटर्न आना ही चाहिए in the next few months to come in the next 1 year 2 years to come when the markets improve and the numbers start showing up in the financial statements as well as also in the balance sheet
तो जो डेट भी है वो भी पे ऑफ हो जाएगा. लाइक आई सेड, $400 बिलियन में जो रिटर्न आपको मिलता है, $450 बिलियन में जो आपको मैनेजमेंट फीस है, जो आपका अर्निंग है, वो 4.5 टाइम्स हो गया है as compared to $100 billion, which was the case in 2019. There could be a slight resistance which we can experience over here, which has been a sort of a high in 21, but eventually the company, the price should move towards 100%, should move towards just its evaluation, just to its valuation price. So it's a clear move, and it could take a couple of months, couple of days till the markets come back to start getting into a bull run. तो ये एक एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर में. डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 3 to 5% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो इन एनी स्टॉक, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच रिटर्न है आपका, क्या पॉसिबिलिटी है. एंड यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर होल्डिंग पोजिशन टिल योर टारगेट. डू नॉट फॉल्टर. आप कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करें क्वार्टरली बेसिस पे, गो थ्रू द अर्निंग्स कॉल, गो थ्रू दियर प्रेजेंटेशंस, गो थ्रू द numbers, and stick to your guns. So this is my advice so far. But yeah, I mean, advice in terms of managing your portfolio. This is not this is only for educational purposes. Please do your due diligence as well as studies before taking any financial decision or investment decision. Do like, share and follow for more, so that also keeps me so that it keeps me motivated to continue to make videos of this kind. Thank you. Until next time.